Hello everyone, welcome to eDufundae. I'm your chemistry mentor for the chapter Alkanes, and we are going to discuss the brief study of hydrocarbons and introduction of alkanes. Let us start with hydrocarbons. What are hydrocarbons? Have you ever thought? Yes, the compounds containing carbon and हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. सो ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास हाइड्रोजन है, जिनके पास कार्बन है, दोज आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स. फॉर एग्जाम्पल मीथेन CH4 that is having carbon as well as hydrogen. Ethane C2H6. These two are the examples of hydrocarbons. Hydrocarbons play an important role in our daily life. Let us see how. Can you give some examples for fuels which we use in our daily life? Yes, LPG, liquefied petroleum gas, is composed of hydrocarbons. और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं LPG में that contains 3 or 4 carbon atoms. और ऐसे कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? Those contain 3 or 4 carbons? Yes, propane C3H8, propane, butane, that is C4H10. So these are the components, normal components of LPG. Next is CNG, compressed natural gas. This gas also comprised of a mixture of gas, okay, that mainly contains hydrocarbons. So this is CNG. और CNG का जो principal component है, that is methane. So methane is the principal component of CNG. Next is LNG. What is LNG? It is liquefied natural gas. It also contains hydrocarbons. Okay? और जो major constituent होता है LNG का, that is methane. Methane is the main constituent of LNG, and with methane it contains other hydrocarbons also. Hydrocarbons used in fuels like CNG, LPG, etc. And these are used for the manufacturing of polymers. Polymers की manufacturing के लिए भी हम hydrocarbons use करते हैं. For example, PVC. What is PVC? It is polyvinyl chloride. Okay, so polyvinyl chloride, or that is also known as polypropylene, polystyrene, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम हाइड्रोकार्बन्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिससे पाइप्स बनती हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर. दे ऑल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड ड्रग्स. यस, डाइज क्या है हमारे पास? एजोडाइज. दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं, दोज आर यूज्ड एज डाइज. दैट गिव्स कलर. ओके, एंड मेडिसिन्स में भी हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, दोज आर यूज्ड. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. Based on the bonds present between carbon atoms, these can be classified into 3 categories. Yes, when we can classify the hydrocarbons into 3 categories, which depends upon the bonds that is present between carbon atoms. So hydrocarbons can be classified into 3 categories. First is saturated, then unsaturated, then again aromatic. Okay, so the 3 categories are saturated, unsaturated and aromatic. Examples: open chain hydrocarbons is known as aliphatic hydrocarbons. जो open chain hydrocarbons होते हैं, उनको हम aliphatic hydrocarbons बोलते हैं. Okay, for example, this is ethane. इथेन का एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे, देन वी कैन से इट इज एन ओपन चेन कंपाउंड एंड इट विल कम अंडर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. नाउ कंसिडर दिस हाइड्रोकार्बन विच इज हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स.
since it is having double bond as unsaturation, so it is considered as unsaturated hydrocarbon. अगेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास एक और एग्जांपल है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. ओके, जो डबल बॉन्ड है दैट इज ऑल्सो अनसेचुरेशन, ट्रिपल बॉन्ड इज ऑल्सो अनसेचुरेशन, सो दीज टू विल बी कंसिडर्ड एज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज टू? दिस इज ethene, okay, and this is ethyne, because there are two carbons present and having triple bond. Ine is the suffix used for triple bond, and ene is the suffix used for double bond, and they belongs to the family of ethene and alkene and alkyne respectively. Next is benzene. Benzene is an example of aromatic hydrocarbon. Why aromatic? Because it is cyclic, having conjugation present in it, because it is having alternate double bond, single bond, double bond, single bond present in it, and also follows the rule of Haeckel. Okay, and according to which जो benzene है उसके पास है 4n+2 pi electrons. ठीक है, जब n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे देन वी विल गेट 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ओके, और बेंजीन के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 2 and 2. 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ बेंजीन. नेक्स्ट इज व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? So the definition is the hydrocarbons containing single bonds between two carbon atoms. Yes, अभी हमने एक example consider किया था, that is ethane. Ethane का example हमने consider किया था, और ethane का structure कैसा होता है? This is like this. Okay, और सभी जो कार्बन है उनके बीच में single bond है, that is why this is a saturated hydrocarbons. So there is a single bond between carbon and carbon, that is why it is considered as saturated hydrocarbon. Example alkanes and cycloalkanes. Yes, जो alkane का example हमने अभी consider किया, this is ethane. Okay, so all the alkanes containing carbon single bond, that is why they all are saturated, while जो cycloalkanes होते हैं वो भी क्या होते हैं हमारे पास? Saturated hydrocarbons. For example cyclohexane or cyclobutane, these all are saturated hydrocarbons because they are not having any unsaturation present in them. Next is what are unsaturated hydrocarbons? So the hydrocarbons which contain double bonds or triple bonds between two adjacent carbon atoms, they are considered as unsaturated hydrocarbons. एग्जाम्पल इथीन. इथीन को अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे देन इट विल बी लाइक दिस. So this is our ethene which is having carbon double bond present in it. That is why it is unsaturated hydrocarbon. Now let us consider ethyne. Ethyne का structure कैसा होगा? C, triple bond C, and here is H. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? ट्रिपल बॉन्ड, एंड दैट इज अनसैचुरेटेड बॉन्ड. नाउ वी आर हैविंग व्हाट आर साइक्लोएल्केन्स. जो साइक्लोएल्केन्स हैं वो क्या होते हैं? द सैचुरेटेड कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स कार्बन atoms in a closed chain or a ring are called cycloalkanes. Let us consider an example to understand this term. Cycloalkanes. Cycloalkanes हमने अभी डिस्कस किया था. This is cyclohexane. Cyclohexane, why? Because it involves 6 carbon atoms. 6 carbon atoms. और alkanes, अल्केन क्यों बोला हमने इसको? बिकॉज जो जितने भी कार्बन एटम्स हैं, जितने भी एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं, वो आपस में सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. सो इट इज ऑल्सो सैचुरेटेड कंपाउंड. नाउ कंसिडर एन एग्जाम्पल cyclopropane. Cyclopropane. Propane means 3 carbon atoms are involved. So we are having cyclopropane and the structure is this, in which there are 3 carbon atoms present in the ring.
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज साइक्लोब्यूटेन. साइक्लोब्यूटेन में होंगे हमारे पास 4 कार्बन एटम्स इन द रिंग and this is the structure of cyclobutane. That's all about this topic. Thanks for watching.